So, friends, while some of our other friends are joining, I would like to start with something really interesting, and I want the participation of all of you. But you have to promise that you're going to be spontaneous in writing your answer to what I ask. So, you have to fill up this blank, or rather, you have to complete this statement. I will give you the first two words, maybe three words, and that is every sound, every sound. Now fill this statement. Be as quick as you can. Every sound, divine, is silence, blissful, energy, awesome, excellent, vibration. Let all the comments pour in. Excellent, excellent. Every silent is music. Great, blissful, energy, vibrates, power, is heard, light, melodious, is saying something, vibration, frequency, source, Om, yes, energy, wonderful. That's really wonderful, dear friends. Excellent, excellent. Is joy, life, yes. When we speak from our experiences, dear friends, the learning becomes many folds. So it's not just that you are here to learn something. There is an equal and opposite learning that is happening. There is a giving and receiving, which is happening on both the sides. So from all of you, from all these beautiful, responses that you're giving, I get to see the many versions of silence or for the sound. That's wonderful. So friends, this brings us to the very topic of today's meditation, and that is sound of silence. Now, there is a story, a small incident, rather, I can say there's something that inspired me to pick up this topic for all of you. And, most of the times when we go into, meditation circles, be it done in a personal space or on a virtual setup, I have seen many people questioning, or rather, sometimes getting disturbed by the noises or the sounds. I, sometimes, uh, the greatest barrier the person or we as a meditator can feel in our, journey of turning inward is noise, the sound or the noise. It could be an outer noise wherein outside the road there is, a four-wheeler honking, or there is a sound at home, or any other kind of outside sound which kind of distracts us from our meditation practice. Well, that is one type of, sounds that we get irritated and frustrated from when we meditate. And the other type of, the noise that we have is the noise in our head. Often we blame thoughts, but it is actually the noise of the thoughts that trouble us, right? And when we are too much engaged with that noise, because thoughts are like natural, it's a birthing place, it has to take birth and it has to die or dissolve there. But the noise that is associated with that thought, and it's not that it is created naturally, we create that noise. Our attachment to that thought creates the noise. And when that gets created, it troubles us even more in our practice of meditation. It doesn't allow us to, grow further in our practice. And this is one of the reasons I have seen many people give up on meditation. They get so frustrated in their journey, they feel, oh, I can't control the thoughts, or I can't control this noise. And it's better, and I really don't know if I'm
progressing or moving somewhere, I really don't know, because there is no inner chatter which is going on a pause. Well, it is an inner and outer noise that is one of the greatest barriers we feel. And that has inspired me to pick up this topic, dear friends. If we really wish to grow in meditation, we must come in harmony with all the sounds. We must learn to look beyond the sound, because every sound has an origin in silence. You know, there were many incidents with Ramakrishna Paramhansa wherein he was asked that, oh, there could be many other great goddesses who could come to give you the darshan, but why only Kali? Because she is so aggressive in nature, and can't you see the blood oozing out from her eyes? But he says that it is just at an outer level, it might look to you aggressive. But if you look deeper into that, and if you look into the very origin of that aggression, you will find there is so much calm, so much of love that she carries. And that is what attracts me, and that is what makes me feel as if my mother has come to meet me. Same way, friends, everything that is troubling us in the outside level, every noise, it has an origin from the silence. So today, we are going to let go of all the beliefs, or all the the kind of ideas that we are carrying, that for us to meditate there has to be a pin drop silence. Of course, we can have that, but there are some situations wherein you get the sound because it is beyond your control. And in those moments, you really don't want to get distracted, get up from your chair, or kind of, a real meditator is the one who can really meditate on the traffic lights. And that is what we have to grow. That is what we have to be. So today, I am going to, help you have an affinity with this sound, have a friendship with this sound, so that we are not bothered anymore from now onwards on this journey, and we let go of this, that, oh, this should not be, the sound should not be there, whether inside or outside. Because it's not about that, it's about the state that we meditate from. So if you all are ready, I would like you to give me a yes or a thumbs up, so that it's a collective yes, and we raise the consciousness with each one of us contributing to it. Excellent. All of us who are joining on YouTube as well, I would like all of you to please mention yes, so that we all start. And friends, for today's session, there is going to be no music. It's going to be the silence, right? So we should be comfortable meditating in both the states, right? We should not be over dependent on anything. Yes. So if you are ready, I would like you all to please close your eyes, take off your glasses. Some of you, yes. सरोज जी। जी सर। आज इस अनंत की यात्रा के संध्याकालीन सत्र के 18वें दिन हम लोग एक ऐसे विषय को केंद्र में रख करके आज के सत्र का संचालन कर रहे हितेश वशिष्ठ जी के साथ हैं, जिन्होंने उस विषय को रखा है साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड ऑफ साइलेंस यानी कि मौन की आवाज। तो सरोज जी, आज के सत्र में
इस भूमिका का प्रारंभ आप ही करें कि हितेश वशिष्ठ किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। मुझे जो समझ में आया, उन्होंने शुरुआत तो बड़ा शानदार तरीके से किया, 2 वर्ड के बाद तीसरे वर्ड को फिल करने का, साउंड ऑफ साइलेंस के रूप में। बाकी ये थोड़ा सा मेरे लिए समझ पाना और समझाना थोड़ा मुश्किल है। अभी गीता मैडम से अनुरोध है का केंद्रीय भाव क्या है, तो कि आज के विषय पर कुछ प्रकाश डालें। गीता मैडम। सन्नाटे की आवाज, ये आज का विषय है। हितेश वशिष्ठ जी ने विषय की स्थापना करते हुए एक बात कही कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि ध्यान में कठिनाई हुई, व्यवधान हुआ, क्योंकि कहीं से कोई आवाज आ रही थी, यानी बाहर की कोई भी जो आवाज है वो हमारे ध्यान में व्यवधान उत्पन्न कर देती है। इस पर उन्होंने कहा कि जब कोई आवाज आती है तो उस विचार के साथ में हम एक हो जाते हैं, उस विचार के साथ हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस विचार को हम एनर्जाइज करने लगते हैं। तो तब वो जो आवाज है वो हमें और तेज होकर सुनाई देने लगती है और हम कहते हैं कि हाँ, हमें ध्यान में आवाजों से बाधा उत्पन्न हो रही है। कुछ उदाहरण भी उन्होंने दिए, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में उदाहरण दिया। सारे लोग जो प्रार्थना करते हैं वो किसी शांत देवी की प्रार्थना करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली की उपासना किया करते थे। आवाज नहीं आ रही मैडम। तो ऐसे में फिर हितेश वशिष्ठ ने जो अपनी बात ये कहते हुए कि सही ध्यान तो वो ही है जहाँ पे बाहरी कोई भी जो डिस्ट्रैक्शन है वो कोई बाधा ना उत्पन्न कर सके। एक बात जो उन्होंने कही कि असली मेडिटेटर वही होगा जो ट्रैफिक लाइट पर बैठकर भी ध्यान कर सके। ट्रैफिक लाइट यानी जहाँ शोर की सबसे अधिक संभावना होती है। तो यानी अगर हम साउंड ऑफ साइलेंस, खामोशी की आवाज को सुन सके तो जो बाकी सारी आवाजें हैं वो अपने आप से धीमी होती चली जाएंगी। इसीलिए आज उन्होंने एक और प्रयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि रोज हम संगीत बजाते हैं, लेकिन आज हम कोई संगीत नहीं बजाएंगे। आज का जो ध्यान हम करेंगे वो किसी भी बाहरी संगीत के बिना करेंगे, क्योंकि हमारी जो निर्भरता हो जाती है किसी बाहरी ऑब्जेक्ट पर, किसी बाहरी संगीत पर, वो भी हमें शुद्ध रूप से ध्यान में पहुंचने में बाधक ही हो जाती है। तो आज हम चल रहे हैं सन्नाटे की आवाज सुनने के लिए, खामोशी की आवाज सुनने के लिए, क्योंकि तभी तो उसका उदय होगा जिसे मौन कहा जा सकता है, तभी तो हम वहां तक पहुंच सकेंगे जिसे ध्यान कहा जा सकता है। तो आइए, आप सबका स्वागत है इस यात्रा में। तरीका वही, आनापानसति, आती हुई श्वास पर ध्यान, जाती हुई श्वास पर ध्यान। हाथों की मुद्रा वही, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के गोद में रख लेना। जमीन पर या बिस्तर पर बैठे हैं तो पालथी मार लेना, कुर्सी पर बैठे हैं तो पैरों को आपस में क्रॉस करके जमीन पर टिका देना, जूते चप्पल उतार देना, आंखों के चश्मे निकाल देना और इसके अलावा रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। तो चलिए चलते हैं सन्नाटे की आवाज को सुनने के लिए। बिल्कुल, सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। Yesterday were wearing the glasses. I would suggest every time you meditate, we don't need any props. So take off all your props, be silent, turn within,
and simply close your eyes. Locking your feet or putting your feet on feet, clasping your hands and making them rest in your lap. And we close our eyes. And we take 3 long, deep breaths now, breathing in from your nose. Hold it for a while and breathe out from your mouth. The way we do an exercise and we warm up ourselves. These 3 breaths are to warm us up, aligning us to the practice of the breath awareness. Taking a deep breath in, filling up the prana in your lungs. Hold it for a while and breathe out. And then come back to your normal breathing. As we focus on our breath, we remind it to ourselves that I am ready. I am ready to rest. Rest in the silence. I'm ready to bond deeply with all kinds of silence. And then we keep focusing on our normal, natural breath. As you stay with the rise and the fall of your breath, having a little pause in between, you're allowing yourself to go deeper. आती जाती श्वास और बीच के अंतराल पर ध्यान देते हुए अपने भीतर और भीतर जाने की कोशिश. Every day we are meditating in this collective space. Every day we practice breath awareness. And because of that, every day it is becoming easier for us to turn within. Every day I touch the new layers of depth within me with total awareness. हम हर दिन साथ साथ ध्यान कर रहे हैं.
इसी कारण हमारे लिए ये संभव है Every कि हम day ध्यान में is गहनता a से भीतर जा रहे हैं। beautiful opportunity हर to दिन एक shift सुंदर our अवसर है consciousness. कि हम अपनी चेतना को और भीतर ले जा सकें। Not trying to change your breath. If the breath is shallow, let it be. श्वास को बदलने की कोशिश न करें। If the breath is deep, let it be. श्वास धीमी है, रहने दें। गहरी है, रहने दें। When we practice meditation in silence, it grows independence in us. जब हम खामोशी में ध्यान करते हैं, It helps हमारी us to परम निर्भरता समाप्त हो जाती है। touch the very depths of our supreme self without any external help. और हम बिना किसी बाहरी मदद के अपने गहनतम भाग का स्पर्श कर पाते हैं। There is any tightness in the body, I would like you to take your time to relax your body. अगर शरीर में कहीं तनाव है, You might तो उसे also कर दें। affirm within yourself, relax, relax, relax. And every time you repeat relax within you, it is helping your body to get relaxed. स्वयं को निर्देश दें विश्रांत रहने के लिए। दोहराएं अपने भीतर, विश्रांत, विश्रांत, विश्रांत। और आपका शरीर आपके निर्देश को अनुपालन करेगा। Doing nothing and allowing this stillness to grow in your body. And as the stillness grows in your body, your mind also करें। gets inspired from that, और शांति को अपने begins to भीतर grow धीरे-धीरे stillness, to begins
जब आप इस शांति को अपने भीतर उतरने देते हैं तो आपका मन भी उसका अनुपालन करता है। It is perfectly okay if your breath is becoming slower, if it is slowing down, becoming subtler in nature. अगर आपकी सांस धीमी है तो रहने दें। You don't have to feel uncomfortable and take a deep breath as if you're trying to catch the breath. There is enough prana which is moving in the body. And अगर we श्वास can trust, बहुत we सूक्ष्म can है trust that shwasa, that तो breath. निश्चिंत रहें, तेज श्वास लेने का प्रयास न करें, क्योंकि आवश्यकता भर श्वास हमारे भीतर स्वयं ही पहुंचती है। Very subtle movement of the prana, the breath energy within you. प्राणवायु बहुत ही सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर रह रही है, जिसे हम श्वास के नाम से जानते हैं। Just be. प्रतीक्षा करें। And while you attain that adequate amount of awareness, I would like you to bring your attention to the sounds around you. भली भांति सजगता बरतते हुए अपने आसपास की ध्वनियों पर The ध्यान sounds that are around you, the sounds in your environment. जो भी ध्वनियाँ आपके परिवेश में है, आपके आसपास है, It could be the movement of the fan, जैसे पंखे की आवाज, or maybe a noise coming from the traffic on the road, सड़क से आते हुए किसी ट्रैफिक के शोर की आवाज, or maybe your pet making some noise at home. आपके घर के किसी पालतू पशु की आवाज। From the loudest of noises, you can listen to the subtlest of all.
तेज से तेज आवाज में से भी आप सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि सुन सकते हैं। You can listen to all of them. सारी ध्वनियों को सुने Total awareness. पूरी सजगता के साथ। And through this practice, we get an opportunity to experiment with those sounds that have irritated us, bothered us the most. और इस प्रयोग से I'd like you to आपको pick up any of the sounds in your surroundings that has उन सब bothered आवाज़ों you को the most. पहचानने का मौका मिलता है जो आपको परेशान करती थी। And just put your attention on that sound. Let it be. अपना ध्यान उन आवाज़ों पर केंद्रित Now करें। this is the music. सुनिए कि हाँ, यही तो वो संगीत है। Every noise, every sound has its origin in silence. हर शोर, हर आवाज की उत्पत्ति खामोशी में Even when the evolution process happened for the entire universe, the very first vak that came was Om. सृष्टि के आरंभ के Om. समय जो सबसे पहला शब्द था वो ओम था। And it was from that very sound the appearance of Hiranyagarbha happened. और इस ओम की ध्वनि में से ही तो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई थी। So I would like you, the noise that bothers you, the noise that we don't like, the sound that bothers us, or the sound that we do not like, in its very background, there is silence. जो भी आवाजें हमें परेशान करती हैं, जिन आवाजों से हम परेशान होते हैं, उनके मूल में निश्चित रूप से शांति ही Silence. तो है, खामोशी ही तो है। That is the sound of this sound. खामोशी सबसे बड़ी Rather, आवाज every sound has a silence in the background. और हर ध्वनि के पीछे खामोशी ही तो है। I would like you to bring your attention to this silence behind this sound. अपना ध्यान आवाजों के Be पीछे की there. खामोशी पर केंद्रित करें। This silence is the common center for all types of sounds. खामोशी हर तरह की आवाजों का केंद्रीय बिंदु है। The Supreme Being is a common center for all of us.
जैसे परब्रह्म the हम में Brahman, सभी का केंद्र है, the Atman. जिसे हम ब्रह्मन या आत्मन कहते हैं। And therefore, this silence can give us that direct experience of that supreme being, the source. आवाजों के पीछे की एक खामोशी हमें उस परब्रह्म के साथ जुड़ने का सा अनुभव प्रदान कर सकती है। Giving it not just attention, but loving attention. Pour your love on this silence in the background of this sound. आवाजों के पीछे की इस खामोशी पर सिर्फ ध्यान ही केंद्रित न करें, बल्कि प्रेम पूर्ण ध्यान से इसका अवलोकन करें। And at this very moment now, I would like you to now bring your attention inward to any kind of noise inside your mind. कि किसी क्षण अपने ध्यान को भीतर ले जाएं Any kind of noise और देखें कि क्या आपके मन inside में your कुछ शोर mind. है, क्या आपके It could be भीतर the कोई noise आवाज of है, your thoughts, आपके विचारों का शोर हो or it सकता could be the है, noise which is going on in your head. आपके मन में चल रहा कोई शोर हो सकता है। I'd like you to put your attention there और ध्यान केंद्रित करें on that noise or sound. भीतर के शोर पर, इस आवाज पर ध्यान ले जाएं। Every sound relies on this silence in its background. हर आवाज की बैकग्राउंड में खामोशी ही होती है। And you can connect to that very silence behind this noise. और आप इस शोर के पीछे की शांति से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
Pour your loving attention on this, not just attention, the loving attention. Be the love when you approach that silence. Be the love when you approach that sound. इस खामोशी पर अपना प्रेम पूर्ण ध्यान दें। With total awareness. सजगता के साथ And at this very moment, I would like you to bring your attention to the most disturbing thought that you have. The thought that you run away from. Just welcome that thought. उस विचार की ओर ले जाएं जो It is आपको the सबसे time ज्यादा for us परेशान to करता है। experiment with that thought and see what happens when you focus on the silence behind that thought. आपको सबसे ज्यादा परेशान From करने that वाले thought, विचार से you identify the noise in it. पीछे And की like शांति every other noise, the noise of this very most disturbing thought also relies on the silence in the background. आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाले विचार के पीछे भी अंततः खामोशी ही तो है। Pour your loving attention on this thought, on this noise, on this silence. जो बात आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है उस विचार के प्रति भी प्रेम पूर्ण हो जाए। It is this silence which is the sound of that Supreme Being. यही खामोशी उस परब्रह्म की आवाज है। It is this silence that can give us the direct experience of that Supreme Being, that Supreme Light. यह खामोशी ही हमें उस परब्रह्म का अनुभव करा सकती है। It is
this silence that grows us to our true nature. यही खामोशी हमें हमारे मूल प्रकृति से मिलवाती है.